Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with RAHUL Sharma, your friend and guide. Sir, aspect to language की बात करेंगे. We are waiting for this video. Long period of time हम बोल रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा. पर मैं कह रिप्लाई नहीं लिखा था, सीधा क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपने करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. किस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. अब ये वो कौन से क्वेश्चन हैं, इनको आप कैसे करोगे, करने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाट आर द बेसिक रीजंस दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर. सर एम आई गोइंग टू डू एवरीथिंग? नो, आई एम नॉट गोइंग टू एवरीथिंग. मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये क्वेश्चन कर जाओ, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन कर जाओ. मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट यू गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर पेपर. और कहीं से कुछ नहीं आना, सिर्फ इन क्वेश्चंस पे काम करना. आप हर चीज़ ऑन टिप करोगे. थोड़ा क्वेश्चन बोल होगा पर होगा यही. अच्छा, शुरू करें सर, टाइम नहीं खराब करते, हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम एनिमल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम एनिमल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. हिंदी बोलो तो भैया, इंसान और जानवर के बीच जो भाषा है ना, उसके ज्ञान में बदलाव है, जो डिफरेंस है उसको क्लियर करो. तो आप यहाँ से डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड द एनिमल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन उसको क्लियर करना. पहला क्वेश्चन. नंबर 2, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म इन डिटेल. यूरोपियन अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म जो हम 5 कर रहे हैं गाइस, ये क्वेश्चन वहाँ पे भी मैंने दिया है. स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को क्या क्लियर करना, आपने कैसे बताते हो. तो यहाँ पे यूरोपियन और अमेरिकन के बेसिक डिफरेंस को हाईलाइट किया. यू जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट द डिफरेंस दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड. उसको क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. हम उसको बड़े आराम से कर भी लेंगे. दैट यू गाइस हैव टू डू. जंप नेक्स्ट वन. व्हाट इज मीन बाय डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी. व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी. 100% पेपर होगा, 100%. कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन डेरिवेशन एफेक्ट्स इन डिटेल. So I hope you guys are writing this और इसको प्रिपेयर भी करना है. all these answers in your notes. वो सारे आपके नोट्स में हैं guys, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Every answer is in your notes. Next one. Outline the grammatical changes from old English to modern English. Grammatical changes क्या हुए, old से modern English में जो changes आए ना, उनको highlight करना है. What are the main principles of generative syntax? So what is generative syntax? शॉर्ट नोट में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है. कहता है आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश. नेक्स्ट वन. कहता है व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जेनरेटिव सिंटैक्स. ओके, जंप ऑन नेक्स्ट वन. डिस्कस विद एग्जांपल हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड. नए वर्ड्स कैसे बनते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश. सर इंग्लिश की बात कर रहे हैं, न्यू वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए. देन discuss the vowels of English and explain how they are different from consonants. Vowels of English and how they are different. This is really important. Discuss the vowels of English and explain how they are different from consonants. वो consonant से कैसे अलग है, वो यहाँ क्लियर करना है. Trace the 3 stages of evaluation of English language. Evaluation of English language. What do you mean by evaluation? क्या है, कैसे काम करती है, किन कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, सारी चीज़ें बिगिनिंग से लास्ट तक आप पॉइंट पे पहुँचेंगे. Trace the stages of evaluation of English language. Next one. What are the socio-linguistic? 100% पेपर में क्वेश्चन होगा socio-linguistic का. मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन आपको ऑन टिप होना चाहिए guys. मैं रिपीटिंग द क्वेश्चन guys. What are socio-linguistics? ये socio-linguistic होते हैं. Explain the scope and areas of investigation. इसका स्कोप और इसका एरिया इन्वेस्टिगेशन उसको हाईलाइट करना, एक्सप्लेन भी करना आपको. जंप ऑन नेक्स्ट वन. What is scope in syntax? अभी syntax सर शॉर्ट नोट में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है. Scope of syntax हम बताना है. What is scope in syntax? Describe the scope bearing element in English with suitable example. You need to give an example too. Next one. Discuss the major learner factor that have bearing on second language acquisition. What is second language acquisition? मतलब सीधे दिमाग में आता है second language acquisition है क्या, कैसे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर पाते हैं बिगिनिंग से लास्ट तक. कहता नेक्स्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म.
what is the relationship between linguistic and literary criticism? लिंग्विस्टिक और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस है, उस रिलेशनशिप को बताना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश? स्टैंडर्ड इंग्लिश अलग होती है, स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश अलग होती है. आप उसका डिफरेंस बताओ जी. कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश? डिस्कस द 4 स्टेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंग्लिश. एक इंग्लिश के स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में जो 4 स्टेप्स ना वो बताने हैं आप. Give an account of different types of clauses in English is suitable example. Clauses से तो बचपन चलेंगे clauses. That is block number 5 and 6. Next one. Examine the role of motivation attitude in second language learning. Motivation ये पेपर में आएगा, 100% आएगा. Examine the role of motivation and attitudes in second language learning. दोनों को बताना आपने. Java next one. What do you understand by the language planning? What is language planning? क्या होती है language planning? कैसे काम करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को क्लियर करना पूरा. What do you understand by language planning? Next one. What is speech community? स्पीच कम्युनिटी क्या होती है, इस पे काम कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें बिगनिंग से लास्ट तक आप पहुंचिए. What is speech community? Discuss the problem in defining a speech community. जो डिफाइन करते हैं ना स्पीच कम्युनिटी को, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिफाइन करनी है. नेक्स्ट. Explain and exemplify. Explain and exemplify language variation in terms of dialect, style, and register. Should I repeat? Yes, I need to. Explain and exemplify language variation in terms of dialect, style, and register. Next one. Distinguish between word as a physical shape. Distinguish between the word as a physical shape and word as an abstract entity. एक फिजिकल शेप और एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी. दैट मीन्स phonology and orthographic words. Yes, phonological and orthographic words. Lexemes. Next one. Discuss the different types of bilingualism and its consequences in society. What is bilingualism? Bilingualism सर दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस, मतलब दो लैंग्वेज बायलिंगुअल कहते हैं. अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं उसको हाईलाइट करना है. What do you mean by the spread of English in India? ये जनरल क्वेश्चन है, पेपर में कंफर्म होगा. Discuss the scope of negation and negation is logical operation. Negation क्या है उसका logical operation, short note में दूंगा कंफर्म. List out the example of the kind of negation in English. English में जो negation है उनको हाईलाइट करना है. Then what is mean by the Indianness in English? ये Indianness क्या है, इंग्लिश में इंडिया का जो टच आता है उसे Indianness कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है. Now come up with the short note. This is really important. सबसे पहले नेगेशन. आई होप आपको आता होगा नेगेशन के, जिनको नहीं आता प्लीज वॉच द शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है. नंबर 2 द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. इंपॉर्टेंट सर पेपर में कंफर्म आता है द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. थर्ड वन कॉइनेज. वी नीड टू क्लियर द कॉइनेज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. बोरोइंग्स सर पेपर में आएगा, 100% बोरोइंग पेपर में होगा, whether in short form whether in detail notes. Compounding, blending. Compounding अलग है, blending अलग है, clipping definitely अलग है. Compounding और blending होंगे, clipping होंगे. Next one, back formation. Suffix, prefix, back formation क्या है, coupling. पेपर में आता है word formation by back formation ही आता है. Conversion, derivation, prefix and suffix. I repeat, conversion, derivation, prefix and suffix, infixes. ये शॉर्ट नोट में आया हुआ लगातार लास्ट 3-4 बार में. Infixes, language and parole, one of the most important one, language and parole, you cannot leave it. Competence and performance, yes, competence and performance. Quantify in English, I repeat, quantifiers in English. Derivation morphology. What is derivation? Inflectional morphology. Derivation morphology, inflectional morphology. Chord switching, chord mixing, vowels, blend, पहले बता चुका हूँ blending. Foregrounding, language and style, क्वेश्चन में था, मेजर क्वेश्चन था. Foregrounding through parallelism, ये प्लीज करना है. Foregrounding through parallelism, ये ऑन टिप होना चाहिए आप लोगों को. Cardinal vowel, anaphors, yes anaphors. सब मैंने पढ़ा रखा है. Honestly सबकी वीडियोस हैं, शॉर्ट्स भी डाली हुई मैंने यार. Please do watch. Diphthongs, monophthong, pure vowel बोलते हैं monophthong को. Diphthong, monophthong, that is pure vowel. And the last, not the least, seriously, difference between morphology and syntax.
डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। सर लास्ट में एक चीज़ और कहा था, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का डिफरेंस है, ये तो सबको आता है, आई नो दैट। अब इसके बाद पेपर कहीं से नहीं आने वाला, ये लिख के देता हूँ मैं, दैट यू गाइस जस्ट नीड टू प्रिपेयर दिस। For more, just like, share, and subscribe, and catch you very soon with a new video. Till then, keep studying hard, guys. Wish you all the best.